पोर्चुगीज गोवा से लगभग 60 साल पहले जा चुके हैं, लेकिन आज भी गोवा में एक जगह है जहां पर उनका इन्फ्लुएंस साफ दिखाई देता है, पर्टिकुलरली इन द आर्किटेक्चर एंड द नैरो लेन्स ऑफ दिस प्लेस। आपको कार में इतना कुछ दिखेगा नहीं, इधर चल के ही आपको पता करके चलेगा। अच्छा होगा। अगर अभी साइड में गलियों में बहुत अच्छा ही है, पर कार है मेरा नाम है आयुष दिनकर एंड आई एम ऑन माई वे टू दिस स्मॉल पार्ट ऑफ द पंजिम सिटी विच इज कॉल्ड फाउंटेन हाउस। एज अ फिल्म मेकर मुझे लगता है कि इस जगह को डिस्क्राइब करने के लिए बेस्ट वर्ड है फोटोजेनिक। I mean, you can just point your camera in any direction and you'll get a beautiful shot. मेरे जैसे इंसान और मेरे कैमरे के लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं थी। और सच कहूँ तो फाउंटेन हाउस की गलियों में घूमते घूमते कब 2 घंटे निकल गए मुझे पता भी नहीं लगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने यहां आने से पहले सोचा भी नहीं था। A wise man once told me that the unexpected always happens in India. So when I was filming, all of a sudden a man with a smiling face came and said hi to me. We got talking and he invited me up to his place, which was in the adjacent building. When I asked him what does he do, he said that he likes to do bottle cutting, which was rather surprising because usually people tell you what they do as a profession. Instead, he told me what he likes to do. बातचीत थोड़ी और आगे बढ़ी and that's when he told me about his wife's passing away. उनकी डेथ होने के बाद उन्होंने उनकी फोटोज घर में हर जगह लगा के रखी हुई थी. He had an entire wall dedicated to his wife. I see the doctor pumping her. I ran inside and said, what the hell are you doing? She stopped breathing. That's it. 4 o'clock she was gone. What could I do? Nothing. I've not known for her, you know what I mean? For me, marriage has been a very, very powerful instrument of bonding. So I can imagine seeing her sitting here somewhere, you know, I can smell it. And then, in fact, everyone is asking me, I have not seen you crying. I said, I don't cry. I'm celebrating. I have a lovely life. I'm blessed because I have people. You come with me to the church. I do my prayer. Everyone joins me. When I come out of the church, I'm hallowing everybody. Everybody. And the day I'm not there, they say, what happened? There you go, you know. That's the difference. When you mold people, the whole community gets molded, then you are a blessed person. Just say hi, good morning. Excuse me, I don't know you. So I said, good morning. Something wrong? No. You know, somebody or other will come and say, oh, this is okay. I said, no, why? No, everyone is wishing you. I said, kya karenge? Try from today onwards, just hi, just a smile. Hi, good morning. You know, there are many people who are suffering. The whole world is in chaos. So if you give a smile and you say good morning, that will start your day well. My struggle is spiritual. I must get to a certain level. So when you say spiritually, you want to get somewhere, what do you mean? God is holy. How close are you to that holiness? In the Hindu culture, they say, Atma. Who's Atma? It's the Atma of God that is in you, in him, and that's why we are one body,
whether you like it or not. Even if you don't like him, you're part of him because you're spiritually the same Atma of God. So you think you're on that way, but not there yet. No chance. There are 1 million guys who are throwing kachra. I cannot be the only guy who says I'm clean. Where is it? Somewhere along the line I'm going to toss one napkin or something. But whatever it is, I have to curtail that kind of a laxity and try to become clean. In every way. I'm talking about cleanliness in body, cleanliness in mind, cleanliness in habits. So that should be each one's target. Otherwise, you're not a human being. The biggest sin we have is the mobile. Why? You enter the house reading your mobile, your wife is there. You don't say, hi darling, hi sweetheart. No, you just gone into the house still reading the mobile. Unity, oneness is gone because of the mobile. That is the biggest devil on earth. I've got nearly 32 Bibles. I don't have Russian and I don't have Bengali. I must get these two. The Bible, the Quran, the Bhagavad Gita, they are your bodyguards. You cannot take them away. When you read it, you get power. I tell you, do this now. Religiously, do it for 15 days. And at the end of 15 days, call me and tell me, Edgar, there's a big difference. द अनएक्सपेक्टेड ऑलवेज हैपन्स इन इंडिया। और कुछ दिन आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो बस आ जाते हैं। समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स एंड यू रिमेंबर इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड जस्ट लाइक दैट, एडगर वॉकड अप टू मी विद अ स्माइलिंग फेस एंड सेड हाय। और उस पल के बाद से मेरे लिए ये दिन यादगार बन गया। आई गॉट सम लाइफ लेसन्स, some of which I know might be useful to me one day. ट्रैवलिंग, व्हाट इज़ ट्रैवलिंग? ये सवाल एक ऐसा सवाल है, इसका काफ़ी ब्रॉड डिस्कशन हो सकता है एक्चुअली अगर करना हो तो। आई एम नॉट गोना गेट इनटू दैट, बट आई थिंक यू विल एग्री विद मी अगर मैं ये बोलूँ कि पिछले 5 साल में या फिर 10 साल में देयर हैज़ बीन अ स्टीप इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया हु हैव नाउ स्टार्टेड टू ट्रैवल। एंड अगर आप ओवरऑल देखने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एडिंग फ्यूल टू दिस फायर। We as humans like to share the places that we have been to. We like to showcase ourselves being in those places, which is fine I guess, but the thing is we talk a lot about places, और एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते अपने स्टोरीज़ में, और वो है लोग, द पीपल ऑफ द प्लेस वेयर वी गो। कोई भी जगह कैसी होती है, आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। इट्स द पीपल हु चेंज और नॉट चेंज अ प्लेस डिपेंडिंग ऑन देयर वर्ल्ड व्यू, देयर कल्चर, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स अराउंड देम। एज अ फिल्म मेकर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं और हमारी उनसे बातचीत होती है, तब जो चीज़ें निकल के आती हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, कई बार सरप्राइजिंग भी होती है। आई एम गोना डू अ वीडियो ऑन Patreon where I'll talk about my experiences of interviewing people, especially for the first time. So if you're interested, you can watch it. Thank you so much. See you soon.